ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, welcome dear devotees for the next session of Nectar of Instruction Bhakti Shastri course, and I'm very grateful to all of you for taking out your valuable time and coming. And also, we hope that all of us are learning from these shlokas and are something which we can apply in our life and follow, because these are the instructions which can take a neophyte right above till the highest level of what we are aspiring for, what Chaitanya Mahaprabhu has come to give us. You know. So yesterday we had finished discussing the shloka number 4. So we quickly do the recap of what is happening. So anybody can recall what all things we discussed till now? You can unmute yourself and discuss, or whatever way you feel right. And anything which you learned till now. Not necessary what I have told, but anything. I want to share. हाँ. You were sharing that how this Dadati Prati Ganati, this sloka, Gopal was sharing this is like this movement has started single-handedly, but just by this sloka now this has grown up till such extent. So this is very, very important. Great. Thank you. Anything else? Yes, to you. You need not to wait. You can start quickly. Shivanath, okay, you already spoke. Anybody else? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, we discussed that devotees should discuss like Krishna Katha, means not like normal talks. दिख नहीं रहे आप. Hare Krishna, Prabhuji. नहीं दिख रहे आप. हाथ खड़ा करता हूँ मुझे. हाँ. Prabhuji, Yes. yes. So you shared that how devotees should share about Krishna Katha with their heart in their talks, not that ये अच्छा है वो अच्छा है ऐसा नहीं है, means not like material talks, but where they're getting nourishment that they need to share. Then that relationships becomes more Krishna conscious relationships, if not they're just material friendships. Jai, amazing. Thank you. Sharing Yes. like how devotee association, like this sadhu sangha is very important aspect. Means one can do like a special master lecture reading, book reading by their own. But all this thing, if we don't do in devotee association, then he will not grow. Basically, his ego will not be purified. So ego purification is most important. Otherwise, if this activity is do alone, then he will become like his ego will increase more. He will become more in illusion. Amazing. Well, we saw that analogy, na? Of soil and plant and sunlight and water. And now you take out the plant, put water in its roots, and put it in front of the sunlight. What will happen? It will die. It needs soil of devotee sangha. Very wonderful. Anything else? It's last point. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. You have also told about culture, like it. Am I audible, Prabhuji? It should be decided by some senior, and it should be accepted by everyone, and it will help to grow in spiritual life. Correct, correct. Amazing. आप लोगों को तो सब कुछ याद है. मेरे ख्याल से क्लास की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, बट स्टिल क्योंकि मेरे को ऑर्डर दिया गया है, तो लेट मी स्टार्ट. सो जस्ट क्विक recap of the themes which we are supposed to see. That we saw that how in first shloka it was related to mind and sense control. Prabhupada was emphasizing. Second shloka about atyahar prashaja, unfavorable things, mostly about the attitudes. And third shloka, it was more about guru and disciple. Prabhupada covered in his themes, but we were discussing about favorable items.
And then fourth shloka last, we saw ISKCON purpose is to come together like this. We also saw that how Bhaktivinoda Thakur characterizes or divides these shlokas. 1 to 7 shlokas are for Vedi sadhana bhakti. 8 shloka onwards Raganuga. So we are still in Vedi sadhana bhakti. Don't worry. And then 9 to 11 comes Bhav and Prema bhakti. And if we see the division of nectar of instruction in form of stages of bhakti, then we have 1 to 3 at the stage of Shraddha. If somebody is really having good Shraddha, then he will go for Sadhu Sangh, which is 4, 5, and 6 shlokas. And then 7 describes Bhajan Kriya, Anartha Nivriti, Nishtha Ruchi. 8th describe Asakti, and 9th, 10th, 11th describe Bhav and Prema. So we saw all these things. And we came to the point of 4th shloka in which Raghunatha Rup Goswami is recommending that we should have loving exchanges with the devotees. But with what kind of devotees? Should we have loving exchanges with all kind of devotees, or should we discriminate something? So that is going to be described in this text number 5. Service rendered by an intermediate devotee to the 3 kinds of Vaishnava. A very important thing here to see is that this is the expectation from Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari is able to do all these things. Now, who is Madhyam Adhikari, who is Kanishta Adhikari, and all, we are going to see in our text. And another way to look at this is that if we want to raise from Kanishta level to Madhyama level, then we have to follow the shloka. We saw in last ending how Prabhupada, is urging his disciples that one should raise himself to a Madhyama level, and eventually to Uttama level, but at least to Madhyama level. So if we want to advance to Madhyama level, then we have to do this for 6 loving exchanges, but with whom we have to discriminate. And what is that discrimination that Rup Goswami himself is giving? So let us try to read this shloka and go ahead and try to see what things happen. कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षस्ति चेत् प्रतिनिधिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्य अन्या निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या. Word to word meaning and translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Krishna, the holy name of Lord Krishna. Iti, thus, yasya, of whom, giri, in the words or speech, tam, him, manasa, by the mind, adriyeta, one must honor. Diksha, initiation, asti, there is chet, if. Pranati bhi, by obeisances, cha, also, bhajantam, engaged in devotional service, isham, unto the Supreme Personality of Godhead, Shushushaya, by practical service, bhajana, vignam, one who is advanced in devotional service, ananyam, without deviation, anya nindadi, of blasphemy of others, etc. Shunya, completely devoid, hridam, whose heart, ipsita, desirable, sangha, association, labdhya, by gaining. Translation. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. Okay? Now here 3 categories are mentioned. Please kindly see. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha, and is engaged in the worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. So here we see Rup Goswami. He has given us a very clear-cut guidelines that when we want to do the 6 loving exchanges, how we should do it with various categories of devotees. So now very important factor is with non-devotees तो पहले ही सेकंड थर्ड श्लोका में बोल दिया जन संग है ना संग त्यागात वो तो सब उसी में बोलते हैं नॉन डिवोटीज के साथ तो एसोसिएशन करना नहीं है अब डिवोटी में भी देर आर वेरियस ग्रेडेशंस है ना and in that gradations he is telling one by one. First he is telling one should mentally honor the devotee who chants the holy name of the Lord Krishna. So if somebody starts chanting the holy name of the Lord Krishna, one should mentally honor him. Now, it's not that anybody who chants we should honor mentally. Prabhupada in his purport, he actually gives the label. So here,
Rup Goswami is not labeling those devotees, but he is just giving a general description. But Srila Prabhupada, he labels those devotees as Kanishta Adhikari. Now, Kanishta Adhikari is not just he is chanting Hare Krishna, he is something more than that. That will be seen in Prabhupada purports. But broadly, he is telling that if somebody is chanting the holy name of Lord Krishna, then we should mentally honor him. Mentally, he is good person. Second, one should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation. Prabhupada calls him the Madhyam Adhikari. And not just initiation, because many of the devotees might not be initiated. Or if he's initiated, that means he's a Madhyam Adhikari. No, there are more characteristic to it. We will see. And finally, one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotion service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. So, with the third category of devotee, Rup Goswami is telling one should faithfully serve, associate with. Serve and associate means he is expecting us that we should make him our guru. Such kind of devotee should be accepted as guru, whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. Okay. So now in this shloka, very important points, some to be considered in this. So we see that in nectar of that fourth shloka, importance of associating Vaishnavas were told. And as I told you, what kind of Vaishnavas should be selected as friend and how he should be served is explained in fifth shloka. And there is something more important to it. What is important? According to the instruction given in this verse, as long as sadhaka remains within the Madhyam Adhikari stage, he is obliged to render service to devotees. So that means this hint is given by Srila Bhaktivinoda Thakur, that this shloka is specifically for those who are in Madhyam Adhikari stage or those who are aspiring to come for Madhyam Adhikari. They should also follow this shloka. So this shloka, you can say it will be relevant to those who are in this stage or who are aspiring to come to this stage. For any new person, if you tell this shloka, they will say, Prabhuji, क्या चल रहा है? कहाँ से आ गए आप? है ना? क्या बोल रही है ना? Because he will not be able to understand. क्या discriminate कर रहे हैं? आप ही के तो भगवत गीता में बोला जाता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गरीबे हस्ते नहीं सुनी चेवा सौभाग्य जा पंडिता समदर्शना. एक बार डिवोटी बन के तो सबको इक्वली देखना है ना? फिर ये डिस्टिंक्शन क्यों कर रहे हैं आप? और सब तो डिवोटी ही है. नहीं 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 नहीं. यस, वो कनिष्ठ के लेवल का अच्छा है, बट व्हेन वी आर प्रोग्रेसिंग, even there is discrimination. And then this verse gives instruction on Swarupa Siddha Bhakti. Swarupa Siddha Bhakti means what? Swarupa Siddha Bhakti means those elements of bhakti, as we discussed previously also, which we are directly applying, which are directly pleasing to Krishna, and which are in themselves the elements of pure devotion service. So till now हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वर्स जो था वो मेटेरियलिस्टिक लोग भी कर सकते थे, है ना, और वो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस नहीं था. बट यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस का, स्वरूप सिद्ध भक्ति का एक अंग है. और वो अंग कैसे करना चाहिए उसका इंस्ट्रक्शन इस वर्ष में दिया हुआ है. हमने देखा सत्संग, सतोव्रते, वो भी एक साधु संग है, वो भी एक लिम्ब है डिवोशनल सर्विस का ना. रूप गोस्वामी बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में. बट कैसे करना चाहिए उसको इस वर्ष में बताया गया. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ द हरिनाम. ये जो लास्ट वाला चीज दिया है कि सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर, तो आगे जाके हम देखेंगे कि वो जो उत्तम अधिकारी है जिनको हम एज अ स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी इज एक्सेप्टिंग होली नेम थ्रू हिम, है ना. एंड व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग होली नेम, देन हाउ वी शुड टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम by following his instruction. That is what is explained in this verse. So what we will do is, keeping in mind that our course should not become too big, and it's not completely detailed in-depth study, what I have done is from this verse onwards, till now we were going purport by purport, paragraph by paragraph, and we were seeing what all things are covered. But this verse onwards, with all of your permission, I am going to take thematic way. So thematic way means what? आप सबको प्रभुपाद का परपोट खुद पढ़ना पड़ेगा, और वो प्रभुपाद के परपोट को ही पढ़ के उसको थीम्स में डिवाइड करके हम उसको प्रेजेंट करने वाले हैं. ठीक है? क्यों?
जिससे कि वो शॉर्ट हो सके और सब कुछ एक साथ आपको बताया जा सके, है ना। नहीं तो अगर हम लोग पर्पट्स पढ़ेंगे एंड स्लोली स्लोली जाएंगे तो मे बी इट मे टेक मोर टाइम, एंड बिकॉज वी वांट टू रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ भक्ति शास्त्री कोर्स, ऐसा नहीं कि भक्ति वैभव कोर्स बन जाए वो। तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके थीम्स में डिवाइड करके चलेंगे। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आप आए तो प्लीज़ जो हमारा श्लोका चल रहा है उसका परपोर्ट प्रभुपाद जी का पढ़ के आइए। पूरा ज़्यादा समय नहीं लगता है ना, थोड़ा सा ही समय लगेगा। प्लीज़ उसको पढ़ के आइए, और उसके साथ साथ अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, बिकॉज अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर चला जाएगा क्या चल रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर प्रभुजी? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? बोलो Guruji, प्रभु। like हाँ here, like in translation, he's writing this third category. He like we should serve faithfully. This word faithfully means what, Guruji? Yes, like miss what its meaning? Like yes, prasadat bhagavad prasado or like हाँ, perfect. Actually, faithfully means that only that one should have firm faith in the instructions of the Guru. Actually, this third kind of category of devotee which Prabhupada is mentioning, he is a level of Guru, hmm, Uttam Adhikari, whom we are accepting as spiritual master. So when we accept spiritual master, we have to serve him faithfully. Faithfully means we follow his instructions, we have faith on his instructions, and we are ready to give up our opinions to fulfill his opinion. All these things are there. yes, thank you, Guruji. Okay, devotees, so please get ready. And there are two quizzes also. तो सब नोट डाउन कर लेना, लास्ट में एग्जाम होगा। वो तो फाइनल वाला अलग होगा, मैं अभी खुद भी ले लूंगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू प्लीज बी रेडी। सो नाउ somebody may ask कि प्रभु जी, है ना, एज आई टोल्ड यू कि वाई देर आर सो मच डिस्क्रिमिनेशन विद इन डिवोशनल सर्विस, ऐसा क्यों आप बता रहे हैं? लाइक व्हेन वी टॉक विद आउटसाइडर्स दे से, अरे क्या आप कृष्ण को ज्यादा वर्शिप करते हैं, राम को ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो यस, देर इज डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्ड इवन इन द वैष्णव एसोसिएशन। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? प्रभुपाद राइट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द purport. प्लीज somebody can read. In order to intelligently apply the sixfold loving reciprocation mentioned in the previous verse, one must select proper person with careful discrimination. Srila Rupa Goswami therefore advises that we should meet with Vaishnavas in an appropriate way, according to their particular status. In this verse, he tells us how to deal with three types of devotees: the Kanishtha Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttam Adhikari. Correct. So Prabhupada makes it clear, in order to intelligently apply the sixfold loving reciprocation. We want to do sixfold loving reciprocation, but in order to intelligently apply so that all devotees can grow, we need to have discrimination. Hmm. And that discrimination is based upon adhikar. So this adhikar term is very important in spiritual life. Whatever we are doing, we should be very much clear about what is my adhikar. Like many times we see devotees, they enter into some debate or some controversy without understanding whether it is their adhikar or not. Hmm. But in spiritual life, everything depends upon whether it is your adhikar or not. And we see that if we do not follow that adhikar, then what will happen is we have to bear the consequences. A very common and widely spoken example for this is Sahajiyism. So Sahajiyas are those who take this pure love for Krishna, or that Raganuga Bhakti to be very cheap. Hmm. And without having their adhikar, they enter into it. And then what happens is they commit lot of offenses towards Krishna and devotees, and then they leave bhakti. So similarly, as a progressing sadhaka, we also have some adhikars. Hmm. I'll tell you very relevant thing for all of us. Many times what happens is we get to hear some news in which there is some quarrel between some devotees or some allegation upon some devotees, and then we become very curious, क्या चल रहा है, बताइए कौन सी ताजा खबर क्या है उस डिवोटी के बाद। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट वी शुड चेक वेदर इट इज माई अधिकार टू चेक इट और नॉट। If it is not my adhikar, then I will not allow that information to come to me.
otherwise I will get disturbed. Similarly, in preaching also, sometimes when we preach, we become too much possessive of those people whom we are preaching, and we think I have to deliver him. But who is delivering? And what is my role in that deliverance? My role is small. I have to connect him to the higher parampara. Bas, that's it. Prabhupada and Acharyas are going to deliver that devotee. So when we do not understand our adhikar and practice devotion service, then what will happen? We are going to create havoc for us. Therefore, Prabhupada is telling, not just Prabhupada, in fact, Bhagavatam also says, and Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu also says, that devotees are divided based upon their adhikar. Now, how we can see what is my adhikar and what kind of me? So, there are some characteristics of those kind of devotees which are mentioned. So, we'll quickly go to the characteristics of a Kanishta Adhikari. So, actually, a lot of things are written here and there, but I have just made them into table form so that it's easy to understand. And all of you, I hope that you may note it down and properly do, because at the end we have an exam. So Kanishta Adhikari, how to understand if some devotee is Kanishta Adhikari or whether I am Kanishta Adhikari or not. So in his dealings, so we will see shloka also, but broadly speaking, Kanishta Adhikari, he worships only deity and he has a very poor behavior with devotees because he believes that Krishna isn't deity, not in devotees. So his vision is very narrow. And that is why you will find Kanishta Adhikaris are mostly, they are not able to deal well with the devotees. And Kanishta Adhikari initiation level may be Harinam initiated, trying to chant. He can also be considered to be Kanishta Adhikari if he is not able to associate with devotees properly, if he doesn't know. So many times you will find devotees, they are chanting, they are initiated, but when it comes to staying with devotees and dealing with devotees, serving with devotees, it's very difficult for them. So we should understand that it's a level of Kanishta. Their faith is very soft, Chaitanya Mahaprabhu says, and pliable. Pliable means any time it can change, unsteady. If he hears a news, some news, ISKCON is doing this, ISKCON is doing that, then immediately his faith gets shaken up. Hare, how can this thing happen? It is such a good society. How can some devotee be fall down from this society? Something like that. So his faith is very soft. Why his faith is very soft? Because next thing, his knowledge of scripture is very less. Because he doesn't know the philosophy in and out, he is not aware about the process of devotional service. Therefore, his faith is very small. And because of less knowledge, he has less vision. He sees only God inside the temple. So, therefore, when he comes to a temple, he does all kinds of activities in a very, very, you can say, sincere and respectful way. He will pay obeisances, and I will not speak here and there. He may not use bad language. He may not see, movies and shorts and YouTube videos and all those things. But as soon as he go back to his room or home, he starts all kind of things like a metalist. So in front of Lord, he is behaving very, very, respectfully. But in front of, when he sees that Lord is not there, he is back to the materialistic level. So that is Kanishta Adhikari. And generally his name is called as Prakrit Bhakta. Prakrit matlab his consciousness is still in Prakriti, in matter. That's why he is Prakrit Bhakta. Means he is Bhakta. See, मैंने आपको पहले बताया जो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम है ये सब भक्ति ही हैं, नॉन डिवोटीज नहीं है. नॉन डिवोटीज का तो एसोसिएशन पहले ही छोड़ दिया, वो डिस्कस कर लिया. ये सब भक्त हैं. बट कैसे भक्त हैं? तो कनिष्ठ अधिकारी वैसा भक्त है, प्राकृत भक्त, जिसका कॉन्शियसनेस मोस्टली मैटर से लगा हुआ है. ही इज कंसर्न अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन. He is not concerned about, like for example, if some prasadam will come to him, he will check whether I like this prasad or not. He will not see whether Krishna has tasted it or not. He will not see that. So this is Kanishta. For such Kanishta, there is a shloka in Srimad Bhagavatam which says, Acharyameva haraye pujam ya shraddhaye hate
na tad bhakteshu chanyeshu sa bhakta prakrita smrita. There are four characteristics given. Prakrita, smrita. What are the four? He worships the deity but misbehaves with devotees. He sees only Krishna, treats other poorly, and has some faith in bhakti. This is what uh, Kanishta Adhikari is. And how is his behavior? Kanishta Adhikari का behavior कैसा होता है? So somebody can read the positive behavior of Kanishta Adhikari, please. Faith in Krishna as supreme, willing to follow basic rules learned from family spiritual master, engages in arti worship rituals sincerely, ready to offer some service, can inspire ordinary people to chant or come to temple. Correct. So Kanish Adhikari ऐसा नहीं है बहुत ही बेकार है. He has some good behavior signs, behavioral symptoms. Like he will have faith in Krishna. तो ये मैं आपको बता रहा था कनिष्ठ अधिकारी के सिम्टम. देखिए चैंटिंग बहुत लोग करेंगे लेकिन कृष्ण में विश्वास नहीं है तो उसको कनिष्ठ अधिकारी नहीं बोला जाएगा. हम जाते हैं रोड पे, बहुत सारे लोग ऐसे ताली वाली बजा देते हैं, हरे कृष्णा 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 ऐसे कुछ कुछ करते हैं. दे आर नॉट कनिष्ठ अधिकारी, है ना. कनिष्ठ अधिकारी इज अ पर्सन हु हैज फेथ as Krishna is supreme. He is not confused who is supreme, who is demigod. इसलिए ये सब डिवोटी की कैटेगरी में है, लेकिन डिवोटी में भी कैटेगरी है ना. एंड नॉट ओनली दैट, ही इज विलिंग टू फॉलो बेसिक रूल्स विच ही हैज लर्नड, है ना. ओबेसेंसेस पे करना, प्रसादम प्रेयर्स गाना, तिलक पहनना, कंठी पहनना, धोती कुर्ता, एंड ऑल दोस थिंग्स ही इज विलिंग टू फॉलो. एंड ही एंगेजिंग इन रिचुअल्स लाइक आरती वर्शिप वेरी सिंसियरली, बहुत पक्के तरीके से आता है वो, सुबह भी उठ जाता है. एंड जब भी उसको कोई सेवा बोलो, प्रसादन सर्विंग, यस प्रभुजी आई एम ऑलवेज रेडी, है ना. सो ही डज सर्विसेज आल्सो. एंड सम न्यू डिवोटी कम्स, ही टेल्स हिम, अरे यू शुड चैंट हरे कृष्णा, इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना. लाइक दैट ही इवन इंस्पायर पीपल टू कम क्लोजर टू कृष्णा. बट along with these things he has some negative behaviorals also. Please somebody can read. Thinks high of himself, proud of material skills, confuses material competence for spiritual advancement, disturbed if Madhyama criticizes non-devotees, offends demigods unintentionally, cannot appreciate Lord's paraphernalia, encourage devotees, approves non-devotional behavior out of ignorance. Correct. So these all are the things, something happen, things himself high. उसको लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ. वाई? बिकॉज मेरे को भक्ति मिल गई है. यस दैट इज गुड, बट व्हेन ही गोज इन फ्रंट ऑफ अदर्स ही ऑलवेज इज, हम इस्कॉन से हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तुमको पता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कहा तुम ये माता रानी की पूजा कर रहे हो, ऐसे लाइक दैट ही थिंग्स, प्राउड ऑफ मटेरियल स्किल्स. एंड देन in bhakti, if he learns some singing nicely, playing mirdanga expertly, or using computer, then he thinks himself very advanced and proud because of that. Confused material competence for spiritual advancement. If he learns more shlokas, if he learns how to play mirdanga, if he learns how to sing nicely, if he learns how to dance properly, if he learns how to worship deities, he thinks I am advancing in spiritual life. Disturbed if Madhyama criticizes non-devotees. But if some advanced devotee tells him, Prabhu, these scientists, they are rascals, है ना, और these schools are spiritual slaughterhouse, then he get disturbed, ऐसा कैसे लिख दिया, my God, इतना strongly कैसे लिख सकते हैं, है ना. And offends demigods unintentionally, means he doesn't respect them. He says, अरे मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, demigod सब जाए, है ना, I don't care. Cannot appreciate Lord's paraphernalia, entourage and devotees. ही विल अप्रिशिएट लॉर्ड, भगवान को तो बहुत मानेगा, बट भगवान का पैराफेनलिया, जो भगवान के तदियां हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा, भगवान के डिवोटिस को इतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा. एंड समटाइम ही विल अप्रूव नॉन डिवोशनल बिहेवियर आउट ऑफ इग्नोरेंस. नॉन डिवोशनल बिहेवियर, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल विल फाइंड when he will go to holy places, dham में, है ना, and he will see that some people are doing lot of sahajism activities, circumambulating so many things, and picking up some stone and worshipping it. So he will allow those things also, out of ignorance, because he doesn't know what is what. So see, this also some of the negative behaviors of a Kanishta Adhikari.
Now, along with this कनिष्ठ has some psychological traits. मतलब उसके थिंकिंग का पैटर्न कैसा रहेगा वो भी हमारे आचार्यों ने बताया है ना। क्या पैटर्न रहेगा? somebody can read प्रभु। उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? Emotional stability, easily disturbed, react इमोशनल इनस्टेबिलिटी है वो, emotional emotional instability, easily disturbed, reacts sentimentally. External orientation, follows rituals. Narrow vision, sees Krishna only in temple, does not serve the devotees. Misplaced compassion, supports non-devotional actions out of kindness. Mundane morality, ego sensitivity, feels threatened by correction. करेक्ट। तो इमोशनली ही विल रिमेन इनस्टेबल, घर जाएगा तो परेशान हो जाएगा, या फिर ज्यादा मेटलिस्टिक के साथ मिलेगा, देन ही विल गेट डिस्टर्ब, एंड वेरी इजीली हिज माइंड विल गेट डिस्टर्ब, एंड ही विल एक्ट ऑन सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स मतलब suppose if he came somewhere and his birthday was there and nobody wished him, no devotees, he will think, my god, ये devotees इतना बताते हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति प्रचोदति, मेरा बर्थडे भूल गए, सो he'll get disturbed। एक्सटर्नल ओरिएंटेड, ही इज वेरी पक्का इन फॉलोइंग रूल्स, और दूसरों को भी देगा ये लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना बस, लेकिन ओरिएंटेशन हार्ट का कैसा हो रहा है वो नहीं हो रहा है। ही विल नॉट सर्व द डिवोटीज, एंड ही विल सपोर्ट non devotional actions, mundane morality. Mundane morality means we will see that most of such kind of people, they love to participate in food distribution, just food distribution, and अरे हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको सब कुछ सच ही बोलना चाहिए। he will not accept transcendental morality, he will not accept, and mundane morality से he will be too much affected. Like for example, there was one devotee, he was distributing books, and he used some different means to distribute books, and then this devotee was very much disturbed, प्रभु जी ऐसे कैसे books दे सकते हैं ये लोग, है ना। So he will get disturbed because he doesn't understand that ultimately a book is going in the hand of that person. And ego sensitivity, feels threatened by correction. If somebody will correct him for all this behavior, he will feel ये मेरे को पसंद नहीं करते हैं, I should not talk to him, so he will not accept the correction. ये उसका साइकोलॉजिकल ट्रेड्स है कनिष्ठ अधिकारी के। अब उस साइकोलॉजी में he develops some attitudes, some misconception which are not good and which are not correct also, but because वो कनिष्ठ लेवल पे है तो वो भक्ति को अपने हिसाब से क्या करता है, प्रोसेस करता है भक्ति के प्रोसेस को, और अपने कुछ कंसेप्शंस तैयार कर लेता है। क्या क्या कंसेप्शन तैयार करता है? कहाँ के कंसेप्शन? हाँ प्लीज, कोई रीड करेगा कंसेप्शंस क्या क्या है? Thinks deity worship alone is equal to full devotion. I am advanced because I sing well, cook well, organize well. Why criticize atheist? Everyone is good. God is only in the temple, not at home, work, street. Demigods are useless. They can be ignored. Judges devotional externally. Mistake sentiments for realization. करेक्ट। तो उसको लगेगा अगर मैं डीटी वर्शिप कर रहा हूँ ना, मैं बहुत एडवांस हूँ। अगर मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, बेसिकली एक्सटर्नल चीजों में उसको लगता है मैं एडवांस हूँ। वाई क्रिटिसाइज एथीस्ट? हम देखते हैं प्रभुपाद जी मायावादी इसको कितना क्रिटिसाइज करते थे, मेटेरियलिस्टिक को कितना क्रिटिसाइज करते थे। तो ये क्रिटिसिज्म अगर वो सुनता है कनिष्ठ से, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अरे ऐसे कैसे आप कह रहे हैं। लाइक यू विल फाइंड व्हेन इट न्यू पीपल व्हेन दे कम टू टेंपल, है ना, इफ यू टेल देम अबाउट नेशनलिस्ट, क्या देशभक्त को भी आप ऐसा कह रहे हो, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। लाइक प्रभुपाद भी जब गए थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास, तो प्रभुपाद कैसे बोले कि अरे आप बोल रहे इंडिपेंडेंस भक्ति देनी चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले भक्ति कैसे मिलेगी, ऐसा काइंड ऑफ एटीट्यूड रहेगा। एंड गॉड इज ओनली इन द टेम्पल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड डेमी गॉड्स को इग्नोर करेगा, एक्सटर्नली जज करेगा। मिसटेक सेंटिमेंट्स फॉर रियलाइजेशन, प्रभु जी आज मेरे को चैंटिंग करते हुए रोना आ गया प्रभु जी, मेरे को लग रहा है रागनों का भक्ति के भाव वो नयनम गलत तो सुधार्या होने वाला है प्रभु जी बस, है ना। वो सेंटिमेंट्स थे, वो रोना उसको किसी को पेन देख के भी आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उसको हरिनाम से रोना आ रहा है, बट वो सेंटिमेंट,
वैसे डीटी के सामने जाएगा, डीटी के दर्शन लेगा, ऐसे देखता रहेगा, है ना, उसको लगेगा मैं जगन्नाथ बनने वाला हूँ, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हाथ अंदर चले जाएंगे, वो तो सेंटिमेंट्स है ना। वो ऐसी ही कोई सुंदर सी गाड़ी भी देख लेगा, नई गाड़ी आई है कोई, मान लीजिए इंडिया में रोल्स रॉयस, वो भी देख के ऐसे ही हो जाएगा, वाह, है ना। तो वो सेंटिमेंट्स पे जाएगा। एंड ही विल ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस. What excuses he will give? For his advancement. What kind of excuses he will give? I don't have time for serious study of the scriptures. कहाँ लिखा है इतना पढ़ना है? प्रभुपाद ने दे दिया है सब कुछ. I just want to live a normal life. मेरे को आपके जैसा ना फैनेटिक नहीं होना है, मेरे को नॉर्मल लाइफ लेना है, मेटेरियल वर्ल्ड में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी. आई डोंट सी द पॉइंट इन वरिंग अबाउट एडवांस डिवोटीज. क्यों हम बार बार बात कर रहे हैं प्रभु जी, एडवांसमेंट एडवांसमेंट एडवांसमेंट? ये मध्य मध्यकारी ठीक है, जहां पर है वहां पे खुश रहिए ना. कृष्णा देखेंगे सब कुछ. कौन देखेगा? कृष्णा. मतलब पूरा कारोबार किसको सौंप दिया? कृष्ण के ऊपर, है ना. आई फोकस ऑन माई ओन सर्विसेज एंड ऑफ कोर्स यू ऑफेंड डिवोटीज. तो ये जो एटीट्यूड है, ये भी किसका है? कनिष्ठ अधिकारी का. नाउ समबडी में आस्क कि प्रभु जी फिर क्या होगा उस कनिष्ठ अधिकारी का? कैसे एडवांस करेगा? तो डोंट वरी, देयर आर वेज बाय विच ही विल एडवांस. सो समबडी कैन रीड. Disturbed Problematic attitude. Disturbed when devotees criticize non-devotees. Offends demigods unknowingly. Cannot appreciate Vaishnavas or paraphernalia. Proud of material skills used in service. Approves worldly enjoyment as harmless. Transforming attitude. Continues deity worship. Associates with senior devotees. Studies scripture regularly. Learns proper dealings. Recognizes devotees and non-devotees. Develops friendship, mercy, avoidance skills. Serves mission instead of ego. Understands Krishna is everywhere. करेक्ट. तो उसको क्या करना है? ठीक है, उसका वो अधिकार है नाम, उसको डीटी वर्शिप कंटिन्यू करना है. लेकिन उसको अपने से एडवांस डिवोटीज के साथ थोड़ा एसोसिएट करना शुरू करना पड़ेगा. और नॉलेज कम है तो शास्त्र पढ़ने शुरू करने पड़ेंगे रेगुलरली. और डिवोटीज के साथ वैष्णव एटिकेट्स कैसा है वो लर्न करना पड़ेगा. And then he should understand who is a devotee, who is a non-devotee. He should be able to discriminate within the devotee circle also. उसको ये पढ़ना पड़ेगा कौन है कनिष्ठ अधिकारी, कौन है मध्यम अधिकारी, और कैसे मैं दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ. And then he should develop friendship, mercy with the devotees, and not just focus on developing external skills. And instead of his ego, he should get the instruction from some devotee, spiritual master, and fulfill that instruction. अपने हिसाब से नहीं उसको भक्ति करते रहना चाहिए, उसको किसी सुपीरियर को प्लेजर करने के लिए भक्ति करना चाहिए. Understand Krishna is everywhere in the devotees, and therefore he should respect the devotees. So this is how a Kanishta can progress to Madhyama level. These are not just the things, there are many things. In fact, His Grace Radha Gopinath Prabhu, I remember way back when we were in our PDC days, at that time Radha Gopinath Prabhu used to take this seminar, how to come from Kanishta to Madhyama level. And that seminar goes for 2 days almost. And many details he tells about Kanishta to Madhyama. But here I have written just few, what we can read from Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada only gives all these solutions for raising Kanishta to Madhyama level. So all these things from Prabhupada's purport only, it's not mine. Prabhupada only tells he should associate with senior, he should regularly read the scriptures, and he should also recognize who is who. Not that with any devotee he should be, just talking. And develop friendship and mercy. Sometimes devotees think कि मेरे वो जो सुपीरियर उसके पास समय नहीं है, इसलिए मैं उनसे पूछता ही नहीं हूँ कि मेरे को आपके साथ एसोसिएट करना है. दिस इज अ मिसकंसेप्शन. ये कनिष्ठ अधिकारी का सिम्टम है, बताया ना आपको. आई फोकस ऑन माई सर्विस. आई डोंट सी पॉइंट इन वरिंग अबाउट एडवांसमेंट. आई वांट टू लिव नॉर्मल लाइफ. तो एडवांस ही नहीं होना चाहता, इसलिए एडवांस डिवोटी का संग नहीं करता है. उसके पास ऐसे एक्सक्यूजेज रहते हैं, प्रभु जी के पास तो समय ही नहीं है. ऐसा उसको लगता है ना. तो ऐसा एटीट्यूड कनिष्ठ एटीट्यूड है. एंड इसलिए उसको क्या करना चाहिए? ही शुड ट्राई टू ओवरकम इट. एंड देर आर सम स्पेसिफिक थिंग्स, है ना, जो उसको पता होना चाहिए कि इफ आई एम नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स, है ना, then
the root cause of that thing is that I am missing some point in my life. Like, for example, if he's not able to appreciate devotees, that means he is having too much impersonal influence. Impersonal influence. So he's not understanding Krishna is person, and Krishna is served by devotees. If he is offending demigods, that means he is lacking philosophy. If he is proud of material skills, that means he doesn't know that he is lacking the guru's guidance, who is actually helping him to overcome proud. If he is disturbed by criticism of atheist, that means he has misplaced compassion. He doesn't know कि किसके ऊपर करुणा दिखानी, किसके ऊपर करुणा नहीं दिखा रही है. And if he doesn't read shastras, that means he's just relying upon rituals to progress in bhakti. So these are some of the symptoms of Kanishthadikari. I know they are too much, but that is what Prabhupada has written in the purport. Now, just to recall and help all of you, what you can do is you can solve this, match the following. So आपको क्या करना है, तुरंत चैट में देखना है, जो सबसे पहले सारे करेक्ट आंसर देगा वो विनर है. क्या करना है, 1 लिखना है, 1 के आगे कौन सा सही ऑप्शन है वो लिखना है, और सब साथ में लिखना है. ऐसा नहीं 1 के आगे एक ऑप्शन लिख दिया, 1 फिर 2 के लिखा, ऐसा नहीं. एक ही चैट में सारे आंसर लिखे, 1 के आगे कौन सा करेक्ट है, 2 के आगे कौन सा है, कॉमा लगा के 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपको चैट में भेजना है. आपका समय है सिर्फ 2 मिनट का. आपका समय शुरू होता है अब. एक एक मत भेजिए ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस एक साथ भेजिए प्लीज. ठीक है, तो लेट्स सी आपने कितना पकड़ पाए हैं. जैसे जैसे उदाहरण के लिए, वर्शिप्स ओनली द डीटी, तो इसका क्या सही आंसर होना चाहिए था, वर्शिप ओनली द डीटीज, दैट मीन्स रिचुअल्स विदाउट फिलोसफी. ऐसा हो सकता है. वन का जे, अद्वैत निताई प्रभु बोल रहे हैं. 1 का जे, जे है फेथ दैट कृष्णा इज द सुप्रीम. ओके, एक्चुअली क्या है, आपको बाकी में भी देखना है वो ऑप्शन फिट हो रहा है कि नहीं. सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है. कुछ लोगों को लगा प्रोजेक्ट क्या सुबह सुबह यही सब कर दिया आपने, हम तो सोच रहे थे कि वी विल बी सिटिंग नाइसली इन आवर शॉल एंड कैप, एंड ये क्या आपने पूछ लिया. ठीक है, देखते हैं कौन आपने से अटेंटिवली कर रहा है, ये सब कुछ सुन रहा है ना, या नहीं अटेंटिव हो सबसे ज्यादा. आप अपने कॉपी में लिखिए फिर चैट में डालिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसा, है ना. लेट्स सी. कैनॉट अप्रिशिएट डिवोटीज, अभी हमने डिस्कस किया कैनॉट अप्रिशिएट डिवोटीज, है ना. सॉफ्ट प्लेएबल फेथ, ऑफेंड डेमिगॉड्स, proud of material skills, disturb non-devotee, criticize, does not study shastras. ये तो अभी मैंने आपको बता दिया सब कुछ. कृष्णा ओनली इन टेम्पल, approves worldly enjoyment, helps ordinary people through association. कर लिया, डिफिकल्ट है ना. हाँ भी बोल रहे हैं कुछ लोग, माय गॉड. अभी आप वीडियो ऑफ रखेंगे तो फिर डिफिकल्ट ही होगा ना. जो वीडियो ऑन करके सुनता है उसके लिए इजी रहेगा, इसलिए ऐसी क्विज बनाई. हमको पता चल जाएगा कौन कौन वीडियो सिर्फ ज्वाइन किया है लेकिन अटेंड नहीं कर रहा है. मेरी खुशी के लिए उसने ज्वाइन कर लिया, प्रभु जी भी क्या याद रखेंगे ऐसा.
ठीक है, लगता है मेरा सेशन खत्म करवा देंगे आप लोग, है ना? I'll only. Okay, we have Pushpender Prabhu giving answers. 1 ka. Okay, great. We have Mohit Prabhu also. I. अच्छा, सेम कॉपी कर दिया, लेकिन अच्छा किया ना। ए 2 बार लिख दिया है, ग्रेट। सी लिख दिया इतनी बार, ठीक है। एक्चुअली सब सेम ही लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। आकाश प्रभु ने भी लिख दिया है। ओके, अमन प्रभु का भी आ गया है। ठीक है प्रभु जी, लेट अस ट्राई टू सी व्हाट वाज द राइट आंसर। बाकी लोग आप आराम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया, है ना? सो दिस इज व्हाट we saw in our presentation. Worship only deities, that means he give focus on rituals only without philosophy. Cannot appreciate devotees, ये तो हमने बहुत सुना था। Impersonal influence, correct? Soft pliable faith, that means basic faith but weak grounding, है ना? He doesn't have good faith. Offend demigods, क्यों offend करता है? Because he has the mental contaminations. 5, proud of material skills, प्राकृत भक्ता, है ना? मेटीरियलिज्म में बहुत उसका ग्राउंडेड है। डिस्टर्ब इफ नॉन डिवोटीज क्रिटिसाइज, मिसप्लेस कंपैशन, उसको लगता है कि अरे कैसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। डज नॉट स्टडी शास्त्रास, सेंटिमेंटल डिवोशन, बोलता है ना, हमने डिस्कस किया था कि वो बोलता है मेरे को शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। सेंटिमेंट लेवल पे भक्ति कर रहे हैं। सीज कृष्णा ओनली इन टेम्पल, दैट मीन्स लिमिटेड स्पिरिचुअल विजन्स। Approves worldly enjoyment, that means he has beginner's enthusiasm, he just want to enjoy things. Helps ordinary people through association, that means he has faith in Krishna, therefore he brings people to Krishna. So thank you very much Prabhuji for your wonderful participation. But हमारा क्लास आगे भी है, हमको मध्यम अधिकारी के बारे में भी ऐसे सुनना और डिस्कस करना है ना? सो लेट अस गो अहेड। 1 2 3 4 5 5 स्लाइड्स है मध्यम अधिकारी की, है ना? लेट्स सी। सो नाउ दिस इज व्हाट कनिष्ठ मीन्स। अभी उसके साथ कैसे करना है हमको, मेंटली ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को रिस्पेक्ट करना है, ऐसा रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, जिस कनिष्ठ अधिकारी के अंदर ये सिम्टम है। अभी नाउ मध्यम अधिकारी के बारे में क्या बताया जाता है, तो उसमें भी बताया जाता है ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुष्टुचा प्रेम मैत्री करुणापेक्षा या करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी, what are the symptoms? He exhibit prema towards the Supreme Lord. He does friendship with the devotees. He show kripa to the innocent, and he does upeksha or neglects those who are envious. So this is Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari and Kanishta Adhikari, if you see, both are showing prema towards the Lord. But Madhyam Adhikari makes friendship with devotees, whereas Kanishta Adhikari doesn't do it. Madhyam Adhikari, he shows kripa to innocent and neglect to envious, whereas Kanishta Adhikari, he shows kripa to everybody, है ना? He doesn't discriminate whom to give, whom not to give, है ना? तो लगता है उत्तम अधिकारी जैसा है, लेकिन है नहीं, वो है कनिष्ठी, है ना? And these 4 symptoms are actually the way through which Kanishta Adhikari is known. Now, if we go more in detail of these symptoms, है ना? Let us try to read. Yes, one of you can read this blue box. Madhyam Adhikari offers his love to Lord Krishna. Please पढ़िए. What does it mean? Directs exclusive personal love to Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Understand personal feature of Bhagwan. Practices Shravana Kirtan Smarana with affection. Lord Krishna more than loves Krishna more than liberation, mystic perfections, material enjoyment. So these are the important qualities. Kanishta also love Krishna, but not like this. He loves Krishna out of sentiments. But here we see that he loves Krishna because he understands Krishna as Supreme Personality, but he has firm faith in that. And also, he understands the personal feature of the Lord. He also practices sadhana bhakti nicely, Shravan and Kirtan and Smaran and all these things. And he doesn't want material benefits out of it.
This kind of worship, if somebody is doing, that is Madhyam Adhikari. So why we are discussing Madhyam Adhikari? Because Rupa Goswami has said that those who are in this Madhyama level, what we should do? We should pay obeisances to them. We should pay obeisances to them. So whom we should pay obeisances? Such kind of devotees we should pay obeisances. And Madhyam Adhikari, how is his friendship with the devotees? Somebody else can read? Yellow box. Shows Maitri, friendship based on equality, service attitude, encouragement in sadhana. Sees devotee as Krishna's representatives. Avoid offenses and respect different type of devotees. Kanishta, Madhyama, Uttama. करेक्ट सो मध्यम अधिकारी ही मेक्स फ्रेंडशिप हम वही बात कर रहे हैं मध्यम अधिकारी कैसे फ्रेंडशिप करता है बेस्ड ऑन इक्वालिटी सर्विस एटीट्यूड वो देखता है कि सामने वाला कैसा डिवोटी है उसके फ्रेंडशिप करने योग्य है कि नहीं डिस्क्रिमिनेट करता है एंड ही अंडरस्टैंड कि डिवोटीज आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा इसलिए डिवोटीज को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए भले ही वो कनिष्ठ ही हो लेकिन मैं उनको ऑफेंड नहीं करूंगा देयरफॉर ही डजंट ऑफेंड्स द डिवोटीज ही रिस्पेक्ट ऑल डिवोटीज बिकॉज ही सीज कृष्णा इन द डिवोटीज कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ मतलब क्या है भगवान और मैं मध्यम अधिकारी ब्रिंग डिवोटीज आल्सो इनटू पिक्चर नाउ हाउ ही प्रीचेस हाउ ही शो करुणा प्लीज समबडी एल्स कैन रीड ग्रीन बॉक्स The innocent, neither devotees nor atheists, simple hearted, searching for knowledge. To them, he gives instruction, prasadam, books, guidance in chanting, tries to uplift them without expecting return. Correct. So he shows mercy to innocent. है ना? How? So he understand that innocent means what? They should not be atheist. They should be simple-hearted people. They are searching for the Lord, inquisitive. है ना? All these people he show karuna, not to the envious people. And how he show karuna? He doesn't show material compassion. Material compassion means material compassion तो कनिष्ठ अधिकारी भी करता है मेटीरियल लेवल पे लेकिन ये मध्यम अधिकारी मेटीरियल कंपैशन ही शो करता है वो प्रसाद भी देता है बुक्स भी देता है गाइडेंस भी देता है चैंटिंग करने में सब पढ़ाता भी उसको तो इसलिए हम बोलते सुनते हैं ना राधे श्याम प्रभु सेज दैट once a facilitator was going to a college and he was going and every time there were some 20 boys coming in his group and Radhe Shyam Prabhu was oh you are so nicely doing how 20 boys are coming he said बस प्रभु जी जाता हूँ प्रसाद बांटता हूँ आ जाते हैं बच्चे राधे श्याम प्रभु से ठीक है प्रसाद बांटना उसके बाद क्या कर बस प्रभु जी प्रसाद बांटता हूँ और पूछता हूँ हाउ आर यू कैसा चल रहा है सब कॉलेज में अरे लेकिन और कुछ नहीं करते नहीं प्रभु जी चैंटिंग चैंटिंग नहीं कराता प्रभु जी तो ये कनिष्ठा का लेवल है वो सिर्फ मेटीरियल उसको एस्पेक्ट देता है लेकिन जो मध्यम अधिकारी है ही एक्चुअली गिव्स हिम द स्पिरिचुअल aspects of growing and of course he preaches to them without expecting anything in return but he also discriminate envious and keep distance from them how please somebody else can read Keep distance from the envious, but meditate on ways to serve them. save them Save them. Why keep distance? Envious people criticize God, blaspheme devotees, reject spiritual instructions. Association harms one's faith and devotion. But simultaneously, a preacher internally desires their welfare. This is called sadachar, saintly behavior. correct so he keeps a distance from them now somebody will say प्रभु जी अगर ऐसा होगा तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा एनवीएस लोगों का उद्धार कैसे होगा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं यही चीज जो यहाँ पे लिखा है ना कि एक्चुअली although preacher is away from them but he is internally desiring for their welfare he that is a compassion of Vaishnava he by going away from them he is desiring their welfare why because otherwise अगर वो वैष्णव उनको प्रीच करने जाएगा and they are envious तो envious में क्या होगा उनकी envy और बढ़ जाएगी envy और बढ़ जाएगी तो और ब्लास्फेम करेंगे और कृष्ण से दूर चले जाएंगे तो इसलिए वो और कृष्ण से दूर ना जाए इसलिए जो डिवोटी होता है वो उनसे दूर चले जाता है दिस इज हाउ मध्यम अधिकारी बिहेव्स नाउ यू विल फाइंड देर आर सम डिवोटीज हु आर एक्सेप्शंस इन दिस लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज was preaching to demonic friends correct and he was trying to make them devotees so there are some exceptions like this we see Nityanand Prabhu was preaching to Jagai and Madai even though they were trying to beat him so
here it is said that this Nityanand Dhruv and Prahlad Maharaj, they are at the Uttama level. And they see everybody with equal vision. So therefore, they do not discriminate. But if somebody is not at that Uttama level, then he should discriminate. Because Uttama person will not get affected only. Whereas Madhyama, his faith is strong, uh, stronger than the faith of the Kanishta. But what problem will happen is, if he will preach to this envious and all, he may get affected by their association. He may get affected. And his practice may reduce. So therefore, one should discriminate. And Vishwanath Chakravarti Thakur said, isliye there are great saints who discriminate. Like for example, Bharat Maharaj, while he was Jad Bharat, he was not giving knowledge to Rahugana until unless Rahugana inquired from him. Similarly, we see that Sukhdev Goswami, he gave knowledge to Parikshit. So many sages were there, but he was, very specifically giving knowledge to Parikshit Maharaj, and so on and so forth. There are many examples like this. So one should be in a Madhyama level, should be able to discriminate who is who and whom to give or not. फर्स्ट गो में नहीं पता चलेगा कि एनवीएस है कि नहीं, लेकिन जैसे आप बात करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. इसलिए नॉलेज होनी चाहिए ये सारी चीजों की. देन वी शुड अवॉइड. एंड देयर आर सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मध्यमाधिकारी. फर्स्ट his trait is faithful. So he has firm faith in chanting and devotional service. उसको कोई हिला नहीं सकता. कनिष्ठ का तो थोड़ा वीक था, इसका अच्छा प्रॉपर फेथ है. इनकंक्लूसिव स्क्रिप्चरल नॉलेज. तो इनकंक्लूसिव मतलब शास्त्र पता है लेकिन क्लियर कट लाइन नहीं पता उसको कैसे जाना है. वो उत्तम अधिकारी को पता रहता है. इसलिए उत्तम अधिकारी गुरु बनने के लायक है और दूसरों को दीक्षा देने के लायक है. तो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि उत्तम अधिकारी और दीक्षा का क्या रोल है हमारे लाइफ में. तो इसलिए मध्यम अधिकारी को भी किसी उत्तम अधिकारी से सुनना चाहिए, उससे गाइडेंस लेना चाहिए. फिक्स्ड एंड अनडिटर्ड. अगर वो कभी कभार डिफीट भी हो जाता है अपने प्रयासों में लॉजिकली, बट ही नेवर गिव्स अप कृष्णा कॉन्शियस. वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि क्यों प्रॉब्लम्स है डिवोटी सर्कल में, लेकिन फिर भी नेवर गिव्स अप कृष्णा कॉन्शियस. नॉन एनवियस एटीट्यूड टुवर्ड्स डिवोटीज एंड गॉड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनल प्रैक्टिस. उसका पर्सनल प्रैक्टिस बड़ा स्ट्रांग रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मध्यम अधिकारी की. सो नाउ लेट अस क्विकली डू द मैच द फॉलोइंग. यस प्लीज प्रभु जी, ये इसमें तो जल्दी से कर दीजिए. एटलीस्ट मेरी लाज रख लीजिए. 8 बज गए हैं, 2 मिनट का समय आपके पास. एंड यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चंस इफ एनी. वी विल ट्राई टू डू इट टुमारो इफ टाइम परमिट्स, और इफ पर्सनली यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क. सो ये बहुत सिंपल है. प्रेमा किसकी तरफ दिखाता है? आज बहुत सारे डिवोटीज का कैमरा ऑन नहीं है. लगता है फॉग की वजह से देख नहीं रहे होंगे. ठीक है प्रभु जी, मैं तो आपको ट्रेन कर रहा था कि यूपीएससी के एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग लगता है कि सिर्फ फाइनल एग्जाम डेथ का ही क्रॉस करने के लिए बने हैं, इसलिए ये सब शॉर्टकट वाले चीज़ों में विश्वास नहीं कर रहे हैं. कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा और फास्ट होना चाहिए था. झक 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 ऐसे होता है ना यूपीएससी में, कम समय में ज़्यादा आंसर देने होते हैं. ये तो फिर कौन सा एससी है? ये कोई एससी नहीं है, उसके ऊपर वाला ही है ना, एनओआई एग्जाम. ठीक है, let us give the answer and discuss, है ना, because time is very less. Prema, he will show prema exclusively towards the Lord, Supreme Lord. Maitri, towards showing friendship, respect and service towards the devotees, है ना. Kripa, mercy, giving guidance.
And then Upeksha. He will do Upeksha from whom? From distance, but praying for their welfare. Innocent. What he will do with innocent, simple-hearted, receptive people. Envious. People who blaspheme God or devotees. This is what simple है. Devotees, tad adhina. Who are those devotees? So he sees that they have proper relationship with other devotees. Krishna, Ishwar, he knows the proper mood towards Krishna. Avoids argument, not engaging in debate with atheists. Fixed faith, never gives up chanting even if defeated logically. So thank you very, very much for your patient hearing, and we hope that this quiz was just like that. Okay, इसमें भी answer दिया कुछ devotees ने. Great, amazing. Thank you. So, Prabhuji, tomorrow we'll see about Uttam Adhikari and in more detail about Diksha. Thank you very, very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.